आवाज जा रही है सभी को? हेलो। Hello. Okay, then we have a question of what is the difference between web and iMode? ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा. What is the difference between web and iMode? Anyone please tell me what is the difference between web and iMode? Class. Anyone please tell me what is the difference between web and iMode? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो. सर आवाज नहीं आ रही सर आप आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है आवाज? सर रुक रुक क्या आ रही है अब आ रही है आवाज? यस सर So some network issue may be there. So what I am saying, the next question, that is, what is the difference between web and iMode? वेब और आई मोड किसके पार्ट हैं? ये वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है. क्लियर? तो इसमें क्या डिफरेंस है? www का पार्ट है ये. सो कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, वेब इज ए, एक तरह से वेब जो है वो यूज करता है WML, जो कि XML का सबसेट होता है. ठीक है. और आई मोड आपका CSTML यूज करता है, जो कि सबसेट ऑफ HTML है. ठीक है. तो ये मेन मेन डिफरेंस है दोनों में. देन वी हैव difference like web uses 3G mobile services, that is providers have web based services like in Europe and big other market, while in case of iMode it is available in Japan only. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, जो मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे आई मोड जो होता है वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही वायरलेस प्रोटोकॉल स्कीम है. ठीक है. जिसमें हमारा जो कम्युनिकेशन है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, आप लोगों ने सुना होगा www, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है. क्लियर? तो आई मोड जो है इट इज सर्व्ड बाय द कॉम्पैक्ट HTML और CSTML, इसको हम CSTML भी कहते हैं. This technically can allow users to access desktop HTML sites. Yeah. Although it looks better if it's been written in CSTML. CSTML शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग. उसका मीनिंग होता है कॉम्पैक्ट HTML. ठीक है. जो कि आई मोड सर्व्ड होता है उससे. ठीक है. सो ये हमारा एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो आपको मेंशन करना होगा. आई मोड जो होता है मोर सिंपल होता है, बट मोर पीपल्स आर यूजिंग वेब बिकॉज इट कवर्स सो मेनी कंट्रीज. ठीक है. आई मोड वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादातर हमारा वेब यूज होता है क्योंकि ये ज्यादातर कंट्रीज को कवर करता है. ठीक है. आई मोड ऑफर्स a lot of content for a fairly inexpensive price. Clear? So these are some very basic differences between iMode and web. So you can get here. Then we have a cryptography related questions, that is network integrity. So what is the integrity? Integrity कोई बताएगा किसको बोलते हैं? Anyone please tell me what is integrity? Okay, so share you the file.
Is it visible to all of you? Class, is it visible to all of? Okay, so डेटा इंटीग्रिटी आप लोग को पता होना, डेटा इंटीग्रिटी में जैसे डेटा हमारा अगर मॉडिफाई हो जाता है, Sir, data must arrive at the receiver. यस, कोई कुछ बता रहा है, बताइए। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? 3 टर्म है, एक होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन, एक होता है डेटा arrive the receiver exactly. ओके, देखिए 3 टर्म होते हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज सेंडिंग फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर विदाउट एनी लॉस। क्लियर? पहला है मैसेज ऑथेंटिकेशन, सेकंड है डेटा इंटीग्रिटी, थर्ड है नॉन रेप्यूटेशन। क्लियर? आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसे डिजिटल सिग्नेचर अगर हम यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर आल्सो प्रोवाइड दीज 3 सर्विसेज। क्लियर? सो डेटा इंटीग्रिटी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि भी हमारा कोई डेटा एक्सेस हो रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ, सम स्पूफिंग में हैपन इन बिटवीन द ट्रांसमिशन, लाइक एनी हैकर में modify the content here in between the sender and receiver. So it is a type of spoofing of the data and integrity may get lost. So we just use this so many things, so many techniques or algorithms we prefer for this basically to maintain the integrity of the message. One of them that is very popular like digital signature, you all know. डिजिटल सिग्नेचर एग्जैक्टली क्या करता है, वेरीफाई एट द रिसीवर इफ एंड फेल्स। क्लियर? सो इसमें बहुत सारे जैसे हैश हमारा हैश फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, तो हैश ऑफ द मॉडिफाइड डेटा एंड द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम विल नॉट मैच, so hence receiver can safely deny the message assuming that the data integrity has been breached, means lost। clear? तो जैसे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर में जैसे जो हमारा सेंडर होता है वो अपनी की से उसको इनक्रिप्ट करता है, प्राइवेट की से, वाइल अदर जो भी उसको एक्सेस करते हैं डेटा को, वो सेंडर्स के पब्लिक की से रिसीवर पे उसको एक्सेस करते हैं। ठीक, तो जिनके पास भी मतलब वो पब्लिक की नहीं होगा या कोई फ्रॉड कोई उसको ट्रैक कर रहा है मैसेज को, तो इट कैन नॉट डिटेक्ट द पर्टिकुलर मैसेज। क्लियर? तो वो साइन जो होती है डिजिटल साइन, दैट शुड बी वेरीफाई एट द रिसीवर साइड। ठीक है? सो दैट इट कैन एक्सेस द डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज डिजिटल सिग्नेचर मॉडल डायग्राम है, मॉडल ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे देखिए आप, एक साइनर है जो कि साइन करता है। ठीक है, या एक तरह से सेंडर कह सकते हैं। इट हैज द डेटा, डेटा पे हैशिंग फंक्शन अप्लाई करता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। क्लियर? तो जो हैश डेटा होता है, हैश में आपका जो डेटा है वो आपका थोड़ा मतलब एक तरह से ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेटा। दैट्स व्हाई वी अप्लाई द हैशिंग फंक्शन। क्लियर? देन इट गोज टू द सिग्नेचर एल्गोरिथम and we apply the signers public private की। तो यहाँ पे फिर साइन मतलब साइनर का प्राइवेट की और हैश डेटा दोनों जाता है सिग्नेचर एल्गोरिथम के थ्रू, we get the data, signature data here। Then we have a data over here, so data and then this signatured, तो भी हमारे पास उसका जो इंक्रिप्शन के बाद सिग्नेचर्ड वैल्यू है, then assemble with the data एंड देन डेटा पे वेरीफायर जो है क्या करता है, हैशिंग फंक्शन अप्लाई करता है एंड गेट द अगेन हैश वैल्यू। क्लियर? ऐसे ही नीचे से जो हमारा यहाँ पे साइनर्स की पब्लिक की से हम जो भी हमारे पास ये ब्लॉक आ रहा है इसको हम वेरीफाई करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू, देन वी गेट द हैश डेटा, और दोनों हैश डेटा को ये मैच कराएगा। तो अगर वो जो भी साइनर है अगर उसकी की से वो मैच करेगा, मतलब अगर सेम की से मतलब कह सकते
सकते हैं कि अगर जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वो उस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता वेरीफायर. So it should be matched at the receiver side. इसका ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन है. A whole concept is given over here. Clear? Then we have so this is all about the encryption with the digital signature. Clear? इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं. It is having advantage. I'm just sharing the another file. खास आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? So we have some Yes, sir, आ रही है. another file I am just sharing regarding this cryptography. Okay. Okay, so if you see, we have another file related to this digital signature and hash function. Clear? So you can see how the message authentication code. Clear? Yeah, MAC is applied on the data accessing. Clear? So from the symmetric cryptography. So to get the symmetric, you can see a MAC is used to prevent Eve from the creating a new message and inserting it instead of Alice message. So हम मैक को यूज करते हैं कि जिससे कोई इन बिटवीन द सेशन ईव कोई भी आके, जैसे सेंडर आपको मान लीजिए एलिस है और रिसीवर बॉब है, तो इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आके वो स्पूफ ना कर पाए ओरिजिनल मैसेज को. क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूजेस मैक. इसलिए मैक यूज होता है. मैक इज मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड. तो यहाँ देख सकते हैं एलिस ने कोई हमारा डेटा था, उस पर की अप्लाई किया हुआ है. की अप्लाई करने से वो मैक में क्रिएट हो गया. ठीक है, कोई स्पूफ्ड पर्सन है तो वो उसको क्या करेगा, उसको स्पूफ नहीं कर पाएगा मैक को. ठीक है, देन इट इज जब ये रिसीवर पे पहुंचेगा तो वेरीफाई हो जाएगा रिसीवर से यही सेम मैक विद द अगेन की अप्लाइड. की के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा एंड देन इट विल बी रिसीव्ड टू बोथ. So this is the advantage of message authentication code. Clear? So it just avoid the type of spoofing. Then we have signature versus map. दोनों में क्या डिफरेंस है? मैक जो होता है इसको मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कहते हैं. इट प्रिजर्व्स डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करता है. That is, it ensures that creation and any changes of the message have been made by authorized entity. Clear? ये इंश्योर करेगा कि जो भी क्रिएशन है या एनी चेंजेस है मैसेज में, दैट इज क्रिएट बाय द अथॉराइज्ड एंटिटी, अथॉराइज्ड पार्टी. सेकंड पॉइंट है ओनली द अथॉराइज्ड एंटिटी कैन चेक ए मैक. केवल ऑथराइज्ड पार्टी जो भी होंगी, एंटिटीज होंगी, वही मैक को चेक कर सकती हैं. एंड ऑल हु कैन चेक कैन आल्सो चेंज द डेटा. जिनको अलाउड है चेक करना मैक को, वही डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं. No one else from that here. So in most legally interesting cases, like if someone want to able to verify that one single individual wrote something. Clear? And the last point is also in many situations it is good if everyone is able to check the signature. कई सारे लोग या एक एक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है ना, पब्लिक की होनी चाहिए इनके पास. डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इन asymmetric ciphers, one single individual holds the private key while everyone can get the public key. So if you encrypt with the private key and send forth cryptogram and message, anyone can check the
decryption with the public key does indeed create the message. Next point है some public key systems do not allow encryption with the private key. Most systems can be modified to generate and verify signatures. ये आप देख सकते हैं. This is the diagram for that. Digital signature can be created using asymmetric cryptography. Clear? So it may just created by asymmetric cryptography. So it is used to prevent any type of spoofing from creating messages and present them as written by the ALS. Clear? Now, if you see, we have a private signing key. That is, the message is sending by the ALS. So signature is created but just by the private signing key. Then at the receiver side, we have a verifier, so which verify that signature using the public verification key of the sender or ALS, and then it is received to anyone. Clear? So spoofing may done in between the ALS and anyone. So or we can say in the signature create and verifying signature, we have if that may spoof the message. Clear? But it is avoided. So digital signature should not be tied to the signing user, but also to the message. Clear? जो भी digital signature है, ये should not only be tied to the signing user, but also to the message. So example of the encrypting with the private key does this. Only Alice can create it, and it is valid only if the decryption and the plaintext code coincide. No attempt is made to hide the information unless it is encrypted using another method. So ये आपका कुछ RSA एल्गोरिथम सिग्नेचर्स हैं. You can see RSA आप लोग को मैंने बताया था राइवेस समीर एडलमंड एल्गोरिथम है, जिसमें हमारा इंक्रिप्शन में यूज करते हैं हम लोग. क्लियर? ये अपने आपको जब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ाया था तब बताया था कैसे हम लोग RSA एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर. सो आप देख सकते हैं Alice sets up RSA as usual. Second point है, in order to sign a message, Alice uses her private key D and not Bob's public key. अपनी खुद की private key से उसको क्या करेगा? साइन करेगा या encrypt करेगा to create the signature like S is equal to m की power D mod n. All Alice जो है, Alice now gives both m and s to Bob. How he uses Alice public key to verify the signature by comparing. Yeah. Now, if we talk about the attacks on the RSA signatures, so if want to sign another message, ME, so that it seems to be from Alice. Yeah. कि कोई जो बीच में स्पूफिंग करेगा वो क्या करेगा, वो another message को साइन करेगा that like ME so that it seems to be from Alice. लगेगा कि वो Alice से नहीं सेंड किया है, but some other person will spoof that message in between the Alice and Bob. So Eve cannot generate a signature directly because she does not have the secret key. तो चूंकि कोई भी जो Eve होगा या हैकर होगा, उसको ये नहीं पता है कि उसके पास सीक्रेट की डी नहीं है, then it cannot generate a signature directly. Clear? She could try to choose signature SE first and calculate ME is equal to
SEE mod n. Clear? Then, but it is unlikely that SEE is a meaningful message. Note that two message signature pairs give away a third sense. Clear? A variation means blind RSS signatures. Okay. So Bob want to prove that he has created a document at a certain time, but keep it secret. So, and Alice agrees to help him. She sets up standard RSA, keeping D for herself. So Bob chooses a random integer k and gives Alice the message t is equal to k की power e m mod n. So the number t is a random to Alice, but the sign the message and gives the signature to Bob. Clear? So s is equal to t की power d is equal to k की power ed m की power d is equal to k m की power d mod n. Okay. So Bob can now divide by k, which is this possible, and retrieve m की power d as a signature for m. Clear? Then we have do not use the same key pairs for signing and encryption. So if Alice allows using the same encryption for encryption and verification, so if can intercept C is equal to m की power e mod n. To decrypt C, if should create x is equal to r की power e c mod n for some r, which yields a reasonable message x, where reasonable means the Eve can get Alice to sign x. Clear? Now, so this is the algorithm for the encryption. If you can see here, then we have discussed the DSA signature method. Then we have algorithm signatures. So if you see, then we have again, if you talk about key length, so key length is also given. Then we apply the hash function. So hash function, we will discuss it later on to the lecture also. Yeah. So iterative hash function is applied also. So hash function is exactly a block type data. Clear? If you see, I just want to show you. Okay, so these are some desirable properties of a practical hash function. It means transformation of message of any length to a fixed length block and dependence on every bit of message. Everyone should be able to check the validity of a hash of a message. You could still use a secret parameter, but this means you restrict the group of people that can verify to the group that knows the secret. These are important terms related to hash function. Iterative hash function is used um, to avoid basically that problem may happen in the mapping. Yeah. So that is complicated. So to avoid this problem, iterative hash functions are used. You can see, so mapping any length input into fixed length output is complicated. That's why iterative hash function is used. So a simple way to use this function is to divide the message into blocks and use the following steps. So सेटअप्स को देख सकते हैं आप, इसमें ब्लॉक 1 है, इसमें हमने हैश एल्गोरिथम अप्लाई किया हुआ है. Then we get the data over here. So it is again attached with the block 2. Then again apply the hash function and so on up to block t. जितने भी होंगे चलता रहेगा ये. ठीक है. तो जो भी हम ऐड कर रहे हैं, तो यू कैन से iterative function with length padding.
ये जो padding length है ये ऐड होता है इसमें. So a simple way is to use the iterative hash function to divide the message into blocks and use the following setup. Okay, class, is there any problem? Class, is there any problem? Okay, so thank you, class. So we will continue into the next tutorial. Thank you, class. Thank you, Hello? sir. Okay.